अस्सलाम वालेकुम सर. Walaikum salam. Presenting screen. Okay. We did till question 7 yesterday, right? Yes, sir. Yes, sir. 7 and 8. 6 and 7. Yes, sir. 6 and 7. 6 and 7. Okay. This is question 8, which I have in this soft copy. You might be having different question in your like hard books. Yes, sir. It So is different. yeah, so that's not an issue. I've shared this book with you. These are just the practice questions. So nothing is compulsory. And tomorrow we'll start with past paper practice. So let's change the color of this page. Okay. If you have any problems in the previous lecture, you may ask, or else we'll start straight away. सर जी बेटे. सर जब दो वैल्यूज आती हैं तो जैसे जीरो पहले क्वेश्चन नंबर 6 में दो वैल्यूज आई थी तो उन दो वैल्यूज में हम एक वैल्यू क्यों डालते हैं? बेटे हम चूज करते हैं, दैट डिपेंड्स. जैसे ये पैरामीटर की उसने बात की थी ना, बट इन दिस केस वी हैड 14.33 एंड 41.67. तो अब दोनों में से जो मर्जी चूज करें, आंसर सेम आ रहा है. ठीक है. जिस तरह से हमने क्वेश्चन 2 सॉल्व किया है, इसमें तो आंसर ही एक था. you'll नो इन दिस क्वेश्चन. इन क्वेश्चन 8 जब दो डिफरेंट आंसर आने हो ना, द एग्जामिनर सेज फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज. उसमें ये था, दिस इज 9C Brown. लेट मी गो बैक. 9C Brown. सो दिस वाज क्वेश्चन 6 बेटे. ये ठीक है, यही था 14.3 एंड 41.6. यस सर. ठीक है. अब आप जोन सा मर्जी यूज कर लें. देखिए हमने ये दोनों किए थे कल. check this one highlighted, 14.3 and 41.67. if we choose breadth as 14.3 तो लेंथ क्या आती है 41.67. if we choose breadth as 41.67 the length is 14.3. ultimately किसी एक ने परपेंडिकुलर बनना है और किसी एक ने बेस बनना है. फाइनल आंसर इज द सेम. ठीक है. इन दिस केस कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जोन सा मर्जी चूज करें. इफ यू चूज द ब्रेथ हैज 14 योर लेंथ विल बी 41. इफ यू चूज ब्रेथ हैज 41 योर लेंथ विल बी 14. सर क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर सर को दोनों को मिक्स अप करने कोई फर्क नहीं पड़ता. मिक्स अप कर दें, फर्क नहीं पड़ता. एंड टुडे यू विल फाइंड आउट द डिफरेंस. अगर ऐसे दो आंसर्स आ रहे हो, उसमें से कोई एक चूज करना हो, अभी पता चल जाएगा. स्टार्ट करें. if this Sir, is the only confusion. Sir, in question number 7 part 3 find the length of PB. Then why did we just put 1/3? Can't we put 0? नहीं बेटे, ये देखें क्वेश्चन 7 देखें. x is 0 and 1/3, right? एक सेकंड मैं ये आंसर क्यों फिर बताता हूँ. इनको आंसर कर लूँ बेटे. यू कैन सी वेयर x is either it is PQ or either it is AP. if you use 0 तो बेटे ये लेंथ खत्म हो जाएगी. so that we already know that x is not 0. ठीक है. लेंथ थी ना, Okay, AP sir. 0 तो नहीं है, PQ 0 तो नहीं है, इसलिए we were able to decide that 0 is rejected and 1/3 selected. जी बेटे कोई और कुछ पूछ रहा था. सर मैंने पूछना था, अभी हमने से पहले कोई एक्सरसाइज की है, एक्सरसाइज 1D से पहले. 1A. ओके सर. जी. Coming on to question number 8, our target is minimum 2 of these questions. मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है. इट इज इजी. स्टे विद मी, स्टे फोकस्ड, एंड इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो विल प्रैक्टिस पास पेपर्स. सो दिस इज एक्सरसाइज 1D. book is D3. soft copy is shared with you as well on Google Classroom. It says there are 2 printers in a library. Printer A prints 60 pages in X minutes. 60 pages and it takes X minutes. And it says write down an expression in terms of X for the number of pages printed by printer A in 1 minute. So if it is printing 60 pages in X minutes, will it print 60 over X in 1 minute? Yes, sir. Yes, sir.
Anyone with any confusion? So that's clear. Okay, moving on to मुझे थोड़ी सी है सर. जी बेटे देखें 60 are total pages. Okay. 60 total and total time is x minute. Suppose x is 10. So when we will solve this, we know that it will print 6 pages in 1 minute. Okay, sir, I got it. Okay, so that is why we are dividing it. Second part, it says given that printer B, that was for printer A, now this is for printer B, and printer B takes 2 minutes longer. That means printer B is slow than printer A to print 60 pages. Number of pages are same, but it takes 2 minutes longer. So may I write 60 over x plus 2. 60 over x plus 2. that's right, 60 by x plus 2. Moving on to the third part, what does it say? Before that, there's an information when both printers are in use, they are able to print a total of 144 in 1 minute. 60 over x plus 60 over x plus 2 is equal to 144. Yes, sir. That's right. Yes, sir. 60 over x for printer A plus 60 over x plus 2 for printer B, and a total of 144 pages in 1 minute. And what does it say? It says show that it reduces to this. So simplification part starts here. First step first, LCM, making the fraction convert into single form. But if someone is texting, kindly speak up. I'm not able to read it. सर ये वो समझ नहीं आया सर, ये दोबारा समझा देगा शुरू से. जी बेटे टोटल पेजेस कितने थे क्वेश्चन में? 60 टोटल टाइम कितना लगता है फॉर प्रिंटर ए? सर x मिनट्स. x मिनट. 1 मिनट में कितना करेगा? सर 1 मिनट में तो नहीं पता, मतलब कितना करेगा. ठीक है, देखें योर गुड नेम ईसा. Isa, if I ask you to count the pages and you counted and you said they were 60 pages. Yes, sir. अब देखते ही हैं कि you counted those in 6 minutes. मैंने देखा जब ईसा को कहा था काउंट करें, ईसा started counting, he took 6 minutes to count 60 pages. तो पर मिनट कितने पेज काउंट किए होंगे? 10. How did you get that answer? 60 divided by 6. Yes, sir. So same is the case, number of pages divided by the number of minutes it took. So there were 60 pages and it took x minutes. So 60 divided by x, you get the rate of per minute. Speed लिखते हैं ना, suppose 7 kilometers per hour, जो भी बेटे डिनोमिनेटर में होता है वो 1 होता है. Yes, sir. तो बिल्कुल ऐसी number of pages per minute. Okay, sir. And then for printer B, Isa, for printer B, it took 2 minutes longer. The only change was in time and nothing else. And in the third statement, it says that when both of them are working, they print 144 pages in 1 minute. We had for A, we had for B, we added them and made it equal to 144. So this is 60x is equals to 144. Continuing with the simplification, that gets 60x plus 120 plus 60x again divided by x square plus 2x is equals to 144. We will cross multiply this in next step. And the first one is 60 plus 60, 120x plus 120 is equals to 144x square plus 288x. Rearranging 144x square plus 288x, taking 120 on the other side, this becomes negative. Another 120 again negative is equals to 0. 144x square, the difference between 288 and 120 is 168. 168. Thank you. 168x minus 120 is equals to 0. Now look at this. We have exactly shabash. और बेटे क्या कॉमन लेंगे? There's an hint in the 24. question. This is shabash. Anyone with confusion के 24 कॉमन आ सकता है. सर कैसे आ सकता है सर? कैसे आ सकता है? बेटे we got 144x square, right? Yes.
And what is there in the question? 144. No, in this equation, in the simplified equation, 6 that is x 6. square plus 7x minus 5. We are having 144 and that is 6. Use your calculator. Write 144 divided by 6. What do you get? 24. 24. That's how you know that our equation is 24 times bigger than the equation in the question. So when you take 24 as common, you're left with 6x square. Kindly do that again. 168 divided by 24. 7. That's 7x, and 120 divided by 24. 5 That's minus 5. 5. Are you getting the point? Yes, sir. Sir, I haven't done that thing. I have solved the question, but I have just found the mid. I have applied the quadratic Quadratic formula formula. on That's 144 x square plus 168 that x is minus 120. that's right. There is one thing that you just solved the fourth part and then the fifth part maybe, but the demand of the question is that show that it reduces to this. You've skipped this part. Your question is correct, your final answer is correct, but you have skipped this part, so you lose these marks. I and got it. and Okay. for now you know that it is not tough. So whatever the examiner says, the hint is always in the question. So we divide this 24 on the other side, and we are left 0. with 6x square plus 7x minus 5 is equals to 0. And the point of satisfaction when we write this shown. Sir, midterm breaking is also possible, sir, here. Midterm breaking is possible, that's right. So let's do it with midterm breaking. It's been neglected for so long. 6x square, and the factors are 10x minus 3x. Do you agree? Adding these two, we get Yes, sir. 7. Yes, sir. Multiplying these two, you get 30x square. So 6 and 10, the common is 2x. You're left with 3x plus 5 and minus Sir, we 1. get a number in negative as well. That's right. Let me reach that point. So minus 1x plus 5, 3x plus 5 is equals to 0. So remaining is first bracket and second bracket. So first 2x minus 1 equals to 0. X is equals to 1 by 2, and the other one is 3x plus 5 equals to 0, and x is equals to negative 5 by 3. Yes. What about this negative number? Sir, we won't use it. We will not use it because x was time, and time cannot be negative. Okay. So we will reject this value. And moving on, hence find the time taken for printer B to print 144 pages. For the fifth part, we know that it takes 60 divided by x plus 2. These much pages per minute, right? So this is 60 over, may I write it as like this, 0.5 plus 2? That Yes, is sir. 60 Yes, by sir. 2.5, and it comes out to be 24 pages. So printer B is printing 24 pages per minute. Sir, why did you write 0.5 plus 2? बेटे, क्योंकि 1 by 2 ये- 1 by 2 ये- equals to ये देख, 0.5. ये देखिए. Look at the second part. We are solving for printer B, and that was 60 by x plus 2. Okay. This was printer A, and this was printer B. The question is about printer B, so I straight away copied this 60 over x plus 2, and then I've substituted the value of x. X is 1 by 2. I've substituted this value here. Is that clear? Yes, sir. So it is now printing 6 minutes. 24 pages, 24 pages in 1 minute. So 144 will be printed in, that is right, 6 minutes. Any confusions in this current question? No, sir. Are we good to go to next question? Yes, sir. Okay. Moving on to the next question. Question number 9.
The question says in January 2009, the price of rice in Singapore was $X per kilogram. A food catering company spends an average of 350 on rice each month. So per kg the price is X and total price we spend is 350. Write down an expression in terms of X for the average amount of rice that the food catering company ordered in January 2009. So we have our total price. We have price for 1 kg. So how many kgs are we getting? That is total price divided by price of 1 kg. Any disagreement? No, sir. No sir. Sir, I am having this again. ठीक है. But if I give you 1000 and I'm asking you to buy XYZ things, something which is 20 rupees per kg, how many kgs will you buy? Total price is 1000, 50 per sir. kg is 20, that's 50. What did you do? You divided the total price with the price of per kg. So 350 was the total price and X was the price of per kg. Is it clear now? Yes, sir. Okay. So moving on, this information in January 2012, the price of each kilogram of rice increased by 15 cents. महंगा हो गया? तो $0.5 का प्लस कर देंगे 350 प्लस Sir, X plus 0.15. X plus 0.15 per kg. But this is per kg increase. So you will add this in X. So total price remains same, that is 350. Now we can buy 350 over X plus 0.15. 15 was cents. Change that into dollars is 0.15. Any confusions? No, sir. No sir. Okay. Number 3, the difference in the amount of rice ordered is 30 kgs. How do we know which value is larger or smaller? 350 by X or 350 by X plus 0.5? Sir, 350 by X is is larger. Is the larger value. So moving on to the third part, the difference between greater value and lesser value is 30 kgs, right? Now Yes, sir. simplification again. Sir, This how is did you find out this thing that 350 divided by X minus 350 divided by X plus 0.5 is equal to 30? in the third part. It's given. It says if the difference. So difference is this. You subtract these two. If the difference in amount is 30 and 30 is already given. Okay. So that is X plus 0.15. Dividing these two, we get 350 times X plus 0.15 minus 350 into X is equals to 30. Sir, can you repeat how you made the second equation? In second part? Yes, sir. So you Okay. can cut X with X. Yes, we'll do that. But in second part, the total price was same 350. But Yes, the sir. price per kg increased by 15 cent here. First the price was X, but now the price is 15 cents more. So it is X plus 0.15. Are you getting it? Sir, so Yes, sir. you converted cents to dollars Yeah. and wrote 0.1. Okay. Yes, X was in dollars. That's why cents are converted into dollars. Okay, step by step. 350X plus 350, So 52.5. 52.5. Thank you. 52.5 minus 350X. सर आप And- X तो करें आप X को कट कर देना नीचे वाले X से because it is multiplied. बेटे ऊपर नीचे कट नहीं हो सकते. क्यों सर? बीच में वो माइनस भी तो और प्लस का मल्टीप्लाई हो साइन रहा है. माइनस प्लस का साइन है. मैं बताता हूँ आपको अभी. एक्स स्क्वायर प्लस 0.15 एक्स इज इक्वल्स टू 30. ये देखिए. इफ आई राइट 5
प्लस 2 डिवाइड बाय 2, ये 2 कैंसिल हो सकते हैं? नहीं नहीं हो सकते ना, बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव साइन। लेकिन मैं सर, अगर बट ऐसे अगर लिखूं, ऐसे हो सकते हैं। अब कैंसिल हो सकते हैं। एक और चीज देखें, अभी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 2 अभी भी कैंसिल नहीं होगा, बिकॉज देयर इज दिस पॉजिटिव साइन। ओके ठीक है, कॉमन आ जाता तो सॉल्व कर देते। सपोज 10 प्लस 2 इंटू 4 ओवर 2, तो बेटे ऊपर कॉमन ले सकते हैं दोनों में, 2 कॉमन आया, दिस इज 5 प्लस 4 ओवर 2, अब कैंसिल हो जाएगा बिकॉज वी आर यूजिंग ब्रैकेट और फुल फ्रैक्शन में कैंसिलेशन हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, वी हैव अ नेगेटिव साइन विद दिस। ओके सर। ठीक है, but now luckily we have positive 350 and negative 350, so the question reduces. We are left with 52.5 and the denominator we've cross multiplied it on the other side. This is 30x square plus 0.15 times 30 is 4.5. 4.5x, rearranging 30x square plus 4.5x minus 52.5 is equals to 0. Stay with me, stay focused. This is the point you might feel some सर आपने confusion. गलत किया सर। नहीं बेटे, ऐसे तो ना कहें। सर वो जो उधर तो कोई और आंसर है, आपका कोई और आंसर है। गलत नहीं किया, अभी कंप्लीट नहीं किया। टीचर के लिए थोड़े से अच्छे वर्ड यूज करते हैं। ठीक है बेटे, ओके सर, सॉरी सर। नहीं कोई बात नहीं। लाइक दैट्स द आयरनी। मैं अभी यहाँ कह रहा था स्टे विद मी, स्टे फोकस्ड, कंफ्यूजन नहीं हो। वो बेटे यही क्लियर करनी है। लुक एट दिस, वी हैव टू शो 20x स्क्वायर, ठीक है, और मेरा आ रहा है 30x स्क्वायर। नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड इट विद 1.5 टू गेट द राइट आंसर। अब बच्चे पूछते हैं 1.5 कहां से आ रहा है? सर कॉमन। सर सारों में कॉमन है। सारों में कॉमन है। सो कैसे आ जाता है? यू डिवाइड दिस 30 with this 20 given in the question, then we know that my equation is 1.5 times larger already. So divide 30 by 1.5, you get 20x square. 4.5 by 1.5, you get 3x. 52.5 by 1.5, you get 35 is equals to 0. You can also write it here, 1 divided by 1.5. You either divide it or take it common, it is your choice. बेटे अब ठीक है? जी सर, अब ठीक है। यस। So last part, hence find the price. बेटे मुझे नाम भूल गया, stay focused, जिन्होंने पूछा था ना x is equals to 0 and 1/3 क्वेश्चन 7 में, तो वो आपको यहाँ पे क्लियर होता जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। Last part says find the price of the kilogram of rice. So now we have to solve this. And looking at the numbers, I think that quadratic formula is easy. So minus b plus minus square root b square minus 4a c over 2a. So a is equals to 20, b is equals to 3, c is equals to minus 35. Plugging in the values, minus b plus minus square root b square minus 4a c over 2a. बेटे डबल चेक कीजिएगा, आई ऑल्सो डू इट। माइनस बी प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4a c over सर इट इज 2a. 53 द स्क्वायर रूट 1 सॉरी, सर द स्क्वायर नहीं रूट ठीक है, कंप्लीटली फाइनल आंसर बता दें। दैट इज 1.25 with the positive sign, and when we replace it with the negative sign, this is minus 1.4. बेटे अब देखें what was x, ये स्टार्ट में प्राइस थी। प्राइस नेगेटिव हो सकती है? नहीं सर, सर हम 1.25 यूज करेंगे ना इसमें भी। यस, तो प्राइस क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती, दैट इज व्हाई इट इज रिजेक्टेड। और वो क्या कहता है, hence find the price of each kilogram of rice in January 2012.
So each kilogram of rice, $1.4. $1.4. In 2012, price was X plus 0.15. So that is 1.25 plus 0.15. That is $1.4. But is it We can clear? do one more question. We have 10 minutes. But it 10 minutes में नहीं होगा. The reason being, if we have 40 minutes, we took at least 15 minutes on average per question. But yes, I'm here. If you want to practice, you can do it. If you have any confusions, we'll solve it. And this Sir, question is सर आप definitely इसकी not रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे? जी बेटे, हर सारी शेयर करता हूँ. जितने रिसोर्सेज हैं वो सब आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड हैं. एक दफ़ा विजिट कीजिएगा. इफ एनीथिंग यू फील इज मिसिंग, आई विल रीचेक दैट. ये इस क्लास का रिस्पांस आज अच्छा है काफ़ी. एंड आई एम श्योर आपने क्वेश्चन नंबर 5 बेटे प्रैक्टिस कर लिया होगा. इफ यू कैन सी एनी क्वेश्चन यू सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट करवा देंगे, सिर्फ फर्स्ट पार्ट, बाकी पार्ट्स मैं कर लूंगा. बेटे देखिए हमारे पास सेम है कि डिफरेंट है, पहले ये बता दें. दिस इज क्वेश्चन 10 व्हिच आई हैव. लाइक सर इक्वेशन बना दें. आपके पास भी सेम क्वेश्चन है ना. बुक्स में बेटे थोड़ा सा डिफरेंट है. इफ यू आर यूजिंग दिस सेम कॉपी, ठीक है. इट सेज रुईफेंग एंड जुईवेंग represents their class in a 10-kilometer race. They started running the same speed x kilometers. After 2 kilometers, Ruifeng increased his speed by 1 kilometer and ran the remaining distance at a constant speed of x plus 1. We maintained the speed of x throughout. Write down an expression in terms of x for the time taken by Ruifeng to complete the race. Okay, we ने मेंटेन की थी बेटे. रुई ये स्प्लिट क्वेश्चंस बनते हैं. सर ये जुनवई D1 में भी आया था, मुझे याद है जी. देखिए दिस इज कंप्लीट 10 किलोमीटर्स, ठीक है. और देखें आफ्टर 2 किलोमीटर्स वो अपनी पेस चेंज करता है. सो वी स्प्लिट इट इनटू टू पार्ट्स. दिस इज 2 किलोमीटर एंड द रिमेनिंग इज 8 किलोमीटर्स. फॉर द फर्स्ट 2 किलोमीटर्स द स्पीड वाज x, राइट? They started running at the same speed of x. So distance divided by speed is time. So time of first part is distance over speed, and time for second part is distance over speed. The speed in the second part is, it says he increased his speed by 1. That is x plus 1. साइमल्टेनियस इक्वेशन होगी. That depends. अभी तो हम लिख रहे हैं कि क्या बनता है. That depends on the shape of the question. So throughout the race, write down an expression for x for the time taken by Ruifeng to complete the race. So to complete the race, the total time is 2 by x plus 8 by x plus 1. This is the total time he's taking. And so on. Given that Ruifeng completed the race in 40 minutes, so बेटे 40 minutes दिए हमें. अब इसको आप equal to क्या करेंगे? This was the first part. Second part में total time already 40 given है. 2 by x plus 8 over x plus 1. तेज कर रहा हूँ. You just have the idea. आप practice कीजिएगा. This is 40 by 60. Any confusion? 60 कहाँ से आया? सर मुझे नो सर, मिनट्स. Minutes को hours में change किया. सर आवर्स को मिनट में. नहीं बेटे, minutes को hour में. ये देखें क्वेश्चन में 40 minutes given है ना. और ऊपर हम क्या कर रहे थे? किलोमीटर पर आवर, इसलिए आर में चेंज कर लिया. नाउ यू विल सिंपलीफाई एंड द इक्वेशन विल टर्न इन दिस शेप. उसके बाद इक्वेशन फाइंड हो जाएगी एंड एक्सप्लेन व्हाई यू रिजेक्ट एंड सो ऑन. ओके सर. साउंडिंग सर, एक मिनट मैं जरा इनसे 9C ब्राउन से प्लीज बात कर लूं. जी मैम. ऑल ऑफ यू बॉयज अस्सलाम वालेकुम. Boys 120 पे आपकी केमिस्ट्री क्लास होगी. All of you are requested to attend that one. I do want to share one thing with you कि कंप्यूटर का एक इनवाइट आया हुआ है, तो प्लीज आई वांट एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम योर क्लास. तो व्हेन यू विल ज्वाइन एट 120 आई विल शेयर इट विद यू पीपल. ठीक है, आपकी क्लास में से कोई स्किप नहीं करेगा. ऑल ऑफ यू शुड बी प्रेजेंट एट 120, राइट? इसीलिए मैंने सर की क्लास में आके अनाउंस किया ताकि आपकी स्ट्रेंथ ना ड्रॉप हो जाए, राइट? ओके मैम. ठीक है, मैंने आप लोगों के वॉइस नाम आप में से 5 बच्चे बहुत अच्छे हैं कंप्यूटर में. आई वांट टू सेंड योर नेम्स, राइट? ठीक है,
Thank you, sir. You're welcome, ma'am.